Welcome everyone. Light emitting diode display, that is LED display. Today's lecture is LED display technology. This is our lecture number 6 of unit 4. So first of all, we will understand what is light emitting diode. It is made up of transparent plastic case around a semiconductor chip which has positive anode and negative cathode terminals. You can see anode and cathode terminals plastic case around a semiconductor chip. You can see semiconductor die. One single LED has an anode and cathode through which current flows, and LED chip which located in the reflector. This is a reflector, and under this there is a LED chip. These parts together wrapped with a transparent or colored synthetic cover and form a small lens that bundles the emitting light. ओके, तो ये जो पूरा यूनिट है इसको हम एलईडी बोलेंगे. इसमें दो पोर्शन है, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड, प्लस एंड माइनस. इधर एक सेमीकंडक्टर डाई है, उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव कैविटी है, या फिर उसको लेंस भी बोलेंगे, या फिर हम उसे एक छोटा सा लेंस बोलेंगे, या फिर एक लेंस कैविटी बोलेंगे. यू कैन टेल एनीथिंग. तो और इसके नीचे होगी सेमीकंडक्टर डाई. तो और इसकी प्लास्टिक शीट में रैप होती है और ये सिंथेटिक कवर होता है. जैसे ही एनोड और कैथोड से हम करंट फ्लो करेंगे या फिर एनर्जाइज करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा. तो दिस इज, और पूरी जो एलईडी टीवी है उसमें सबसे बेसिक यूनिट है ये एलईडी. An LED display is a flat panel which uses an array of light emitting diodes as a video display. जैसा कि मैंने कहा कि arrays हैं, यानी बहुत सारे LEDs एक साथ कनेक्टेड हैं, एक साथ अरेंज्ड हैं और कनेक्टेड हैं, जिससे कि एक साथ मिलके बहुत सारी लाइट्स बनाते हैं और वो आगे जाके पिक्सल जनरेट करते हैं. An LED panel is a small display or a component of a larger display. An LED display is composed of many LED panels which are sometimes used as a form of lighting or illumination rather than for display. An LED display is composed of many LED panels, जैसे कि मैंने आगे भी बोला था, which are sometimes used as a form of lighting or illumination rather than for display. Two classes of LED panels exist: conventional LED panels which use separate LEDs and surface mounted devices, that is SMD panels. Uses of conventional and SMD LED panels. So conventional are larger outdoor displays. In this type of LED panel, groups of red, green and blue LEDs are grouped together to form numerous square shaped pixels. ओके, तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू एलईडी को मिला के एक ग्रुप बनाएंगे तो वो एक ग्रुप बनाएगा एक स्क्वायर शेप पिक्सल. ऐसा कौन से में होता है? तो लार्जर आउटडोर डिस्प्ले जो कन्वेंशनल एलईडीज थी वो. और एसएनडी है वो क्या है? सरफेस माउंटेड डिवाइस इज यूजुअली यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एलईडी डिस्प्ले विच आर यूज्ड फॉर इंडोर पर्पस के लिए. वर्किंग ऑफ एलईडी. LED is given energy and current flows. जैसे आगे हमने देखा था कि LED
को जैसे ही करंट, जैसे ही एनर्जी देंगे या एनर्जाइज होगा तो करंट फ्लो होगा, फिर वो इस यहाँ पर एक डाई होगी, उससे कनेक्ट, उसको उस पर फॉल होगा और लेंस बना, ये रिफ्लेक्टिव कैविटी होगी और लेंस हो, तो लेंस बनता है। तो फिर इससे क्या होगा, ग्लो करेगा और जो भी कलर का डाई है वो कलर की लाइट जनरेट होगी। You can see light waves, bonding wires, and it is made up of phosphorus. Okay, electrons are transported via the cathode and move to at a certain moment to a lower electron path of other material. ठीक है, क्या you can see electron transport to the lower layer. You can see the direction. Electron flow into semiconductor chip because of its chemical nature causes the electrons to give off energy in the form of photons as light. ओके, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट से वो अपनी हायर ऑर्बिटल पे चला जाएगा, तो तब वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. Pixels in red are composed with colors red, green and blue. Pixels in LED are composed with the colors red, green and blue. ओके, सो ये एक पिक्सल जैसे मैंने आगे बताया था रेड, ग्रीन और ब्लू से बना हुआ होता है. So now you can see here, this is backlight. It is actually red backlight, LED backlight. यानी जो पूरा पैनल है वो LED से बना हुआ है, LED से बना हुआ है. आगे जो हम यूज कर रहे थे वो ऐसे ही लाइट्स यूज कर रहे थे, बट नाउ वी आर यूजिंग LED backlight. ये चेंज आया है, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में हमने LED को, पैनल को हमने ऐड किया, तब वो बना LED. Now you can see in this anode cathode, when it is given energy, it is generating light photons. And what happens here, P layer is a semiconductor layer and layer is also a semiconductor. It is highly positively charged, it is negatively charged. Okay, so when energy is given, what is happening here is shown in this. Electrons are getting free, or it is going to higher layer orbital and they are generating photons. This is photons and this is light that are reflecting with the help of that reflective cavity and forming a light. So you can see, ये जो बेसिक चीज़ है कि इसको एनर्जी दिया हमने, तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक्टिव लेयर है, बट ये जो दूसरे जो लेयर्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज लेयर है. पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल. पी टाइप में यू वेरी वेल नो व्हाट आर पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल. P type material are those which are having less electrons in higher orbitals, and N type are more electrons in the higher orbitals. तो जैसे ही एनर्जी मिली तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना पॉसिबल रहता है और यहाँ नेगेटिवली चार्ज होना पॉसिबल होता है, बिकॉज ये वाले जो लेयर होते हैं वो ये वाले जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और पी लेयर के जो भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं. तो ऐसे ही जो भी मटेरियल होते हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं. तो एक्टिव लेयर में से इलेक्ट्रॉन मूव होगा और वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज करेगा और फोटॉन्स रिलीज होंगे, or you can, and then light is generated, and finally you can see the picture. It is passing through liquid crystal, and you know how a liquid crystal works. It passed through the filter, color filter,
and then you can see here what is displayed, and this is glass cover. Advantages: faster turn on LED. On LEDs can reach maximum brightness faster, brighter. LEDs are brighter generally, thus allowing a display to achieve even higher maximum brightness. Thinner. The reason LEDs are coming into prominence is that it was driven by the notebook sectors. LED backlighting can be made thinner. Long lasting. Apparently, LEDs are rated for more life. Also, the degradation over time is less severe. So, these are the references, and thank you so much.